Hello and welcome. Welcome to learning session number 4 of chapter number 3 of Science 1, which is chemical reactions and equations. So far, what all have we seen in this chapter? We had seen introduction and we had seen chemical changes and physical changes. What are chemical changes? Changes in which either bonds are broken or new bonds are formed. Okay, those are chemical changes. And what are physical changes then? Physical changes are the ones in which the state of matter changes. Okay, what are states of matter? Solid state, liquid state, gaseous state, these are states of matter. So solid से liquid हो गया, liquid से gas हो गया, फिर solid से directly gas बन गया. So all these are examples of physical changes. Then we had seen chemical reactions through experiments, and we had seen chemical equations. What are chemical equations? They are a representation of chemical reactions. And in the last learning session, we had seen how to balance chemical equations. Okay. So today we're going to see types of chemical reactions. Okay, so there is combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction, double displacement reaction, endothermic and exothermic reaction. So these are all different types of reactions that we're going to see today. Okay, so our objective for today is going to be students will be able to explain with examples these different types of reactions. Okay, so you all should know, you all should be able to explain each and every reaction, each and every type of reaction, and give examples for each and every type of reaction. Okay, so as promised, before beginning any learning session in chemistry, I'm going to start with this particular table. Okay, so again, I want to remind you all that it is very important for you all to memorize this table if you want to uh, make any chemistry chapter easy for you all. Okay, so I have marked a few of these elements which are important for today's learning session, because in today's learning session we're going to see many chemical reactions, right? So many of these elements are going to be used in our chemical reactions. Okay, so the first one is copper. So see, if you see, you have here copper Cu2 plus also, and just above you have copper plus also. So ऐसे कैसे हो सकता है? कॉपर का प्लस भी होता है और 2 प्लस भी होता है. The reason is it depends on whom it is bonding with. Okay, so depending on the properties of the element which it is bonding with, it will either be in the state of Cu plus or Cu2 plus. Cu plus state में अगर bonding हुआ, then you will call it as Q plus, and Cu2 plus state में अगर bonding होगा, we will call it as copper. Generally cupric नहीं बुलाते, copper ही बुलाते हैं. Okay, next Fe is iron, right? Again, you'll need to remember the names of elements and symbols of elements from the modern periodic table. So Fe is iron. So iron का भी दो states है. Fe2 plus over here and Fe3 plus over here. 2 plus अगर होगा state में, अगर 2 plus state में bonding होगा, then you will call it as ferrous, and Fe3 plus state में अगर bonding हो, you will call it as ferric. Okay. Next, NH4 plus is ammonium, K plus is potassium, Cl minus is chloride, O2 minus is oxide, OH is hydroxide, CO3 is carbonate, SO4 is sulfate, CrO4 is chromate, and that is it. Okay, so all these elements are going to be used in various molecules in the chemical reaction that we're going to see today. So if you want to know from the molecular formula what is the name of this compound, then you all have to by heart this. And if I give you a chemical compound and you have to write the molecular formula from the name of the compound, again, not just the name of various elements and various element groups, you all should also know their states. Okay, whether it is 2 plus, 3 plus, 1 minus, 2 minus, etc. You should know, so that you can cross multiply and get the molecular formula for that particular compound from the name of the compound. Okay, so with that aside, let us begin our learning session for today. Okay, so there is this try this activity given on page number 35. What does it saying? It is saying take a small amount of hydrochloric acid in a test tube and heat the test tube. Okay, so you take a test tube, usme you put some hydrochloric acid and you start heating the test tube. Why are we heating the test tube? We are heating the test tube so that hydrochloric acid का हमें vapors मिल जाए. Once you start heating the test tube in which hydrochloric acid is kept, उसका vapors बनना शुरू हो जाएगा, right? Vapors will start coming out. That is why we are heating. Next, dip a, okay, so in the next part what we are going to do is we are going to take a beaker और उसमें हम लोग अमोनिया डालने वाले हैं. ओके, सो अमोनिया इज सो रिएक्टिव कि उसका अपने आप वेपर्स निकलना शुरू हो जाता है, उसको हीट नहीं करना पड़ता. ओके, सो यू हैव अ बीकर हियर जिसमें अमोनिया रखा है एंड उसके वेपर्स भी अपने आप बाहर निकल रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है. एंड हियर यू हैव
हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन अ टेस्ट ट्यूब एंड यू आर हीटिंग दैट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसकी वजह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी वेपर्स निकल रहा है. देन दे आर सेइंग dip a glass rod in the ammonia solution and hold on the top of the test tube. Okay, so ये जो बीकर है, उस बीकर में जिसमें अमोनिया रखा है, उसमें से ग्लास ट्यूब लेंगे और उसको उसका दूसरा एंड हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के टेस्ट ट्यूब में डालेंगे. सो उससे क्या होने वाला है, व्हेन यू पुट द ग्लास ट्यूब इन अमोनिया का बीकर एंड और इन अमोनिया का सोल्यूशन, अमोनिया का जो वेपर्स है वो टेस्ट ट्यूब में से जाना शुरू हो जाएगा और अमोनिया के वेपर्स टेस्ट ट्यूब में से हाइड्रोक्लोरिक एसिड के गैस से मिलना शुरू हो जाएंगे. That's why we are doing all this. Okay, so दो गैस साथ में आने वाले हैं. So let us see now when हाइड्रोक्लोरिक एसिड का गैस एंड अमोनिया का गैस साथ में आता है तो क्या होता है. Okay, so here you have hydrochloric acid and here you have ammonia. Once that person pulls off that lid, then all the gases are going to mix. Both the gases are mixing and see what we get. We get a white colored smoke. Okay, so why are we getting white color smoke? जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वेपर और अमोनिया का वेपर when they are reacting with each other, we are getting white color का smoke. Why are we getting white color का smoke? That can be explained from the reaction. Okay, so this is the reaction. NH3 in gaseous form, which is ammonia, and hydrochloric acid, which you can also say as hydrogen chloride, is also in gaseous form. तो ये दो gases जब mix हो रहे हैं, you get ammonium chloride. Okay, NH4Cl. There is a difference. Okay, NH3 is ammonia, NIA से end हो रहा है, and NH4 is ammonium, NIUM से end हो रहा है. So NIUM से जो end होता है वो NH4 है and NIA से जो end हो रहा है वो NH3 है. So there's a difference between both of them. Okay, so you get NH4Cl minus. अभी मजे की बात यह है कि यहाँ पे दो गैस साथ में आए थे, राइट, गैस, बट तुम लोग को रिएक्शन के बाद सॉलिड मिल रहा है. सो जैसे ही वो दो गैस रिएक्ट होते हैं, रिएक्ट होने के बाद तुम्हें एक सॉलिड मिल जाता है और वो सॉलिड फटाक से व्हाइट कलर के स्मोक की तरह हमें दिखना शुरू हो जाता है. ओके, बिकॉज द सॉलिड इज बीइंग फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द टू गैसेस, it becomes into powder and it starts falling and we feel like smoke is coming out. Okay, so that is your first activity. Next, hold a magnesium strip in a pair of tongs and ignite. Okay, ignite का मतलब क्या है, जला देना. tongs यानी वो बेसिकली होल्डर होता है. ओके, पकड़ की तरह. अगर तुम्हें समझो दूध गर्म किया और उसका जो बर्तन है उसको तुम्हें उठाना है, तुम अपने हाथ से नहीं उठाओगे, राइट. सो जनरली पीपल हैव दैट होल्डर जिससे वो लोग उठाते हैं बर्तन, गर्म बर्तन. सो उसको केमिस्ट्री लैब में टोंग्स बोलते हैं एंड इग्नाइट यानी जलाना है. तो एक मैग्नीशियम का स्ट्रिप, एक छोटा सा टुकड़ा लेना है, उसको टोंग्स पे पकड़ के जलाना है. Okay, so let us see what happens if you do this. So this is the tongs, this is the magnesium strip, and they've started heating or igniting, which is burning the magnesium strip. What do you see? It starts burning in white color, bright white color में वो burn करना शुरू हो जाता है. Okay, and at the end what we will get is, let us see. So we see a white color powder is left behind. Okay, so here they have explained. On burning in air, a white powder of magnesium oxide is formed. The reaction can be written in the form of equation as shown below. Okay, तो shown below यहाँ पे है. So magnesium strip को हम लोग जब air में burn कर रहे हैं, it is combining with the oxygen in the air. Okay, हमारे atmosphere में oxygen है, उसके साथ वो react करना शुरू हो जाता है when you start burning it. Okay, so magnesium plus oxygen gives you magnesium oxide. Okay, एंड इसका कलर व्हाइट होता है, इसलिए एंड में हमें व्हाइट कलर का पाउडर दिख जाता है. ओके, सो दैट इज एक्टिविटी नंबर 2. नेक्स्ट इज एक्टिविटी नंबर 3. इसमें क्या करना है हमें, वी हैव टू टेक कैल्शियम ऑक्साइड और उसमें पानी डालना है. ओके, वी आर कंबाइनिंग कैल्शियम ऑक्साइड विद वाटर एंड लेट अस सी व्हाट हैपेंस व्हेन यू डू दैट. सो व्हाइट कलर में कैल्शियम ऑक्साइड है एंड ही इज पुटिंग वाटर. सो यू कैन सी वेपर्स आना शुरू हो चुकी है, राइट. वेपर्स आना शुरू क्यों हो रहे हैं, बिकॉज बहुत हीट प्रोड्यूस हो रहा है. ओके, and if you see after some time it starts boiling, right. यहाँ पे देखो there are bubbles being formed. So after some time it starts boiling. So when you add a few pieces of calcium oxide in water, what you get is calcium hydroxide is formed by combination of calcium oxide and water with generation of large amount of heat, which you can see यहाँ पे बहुत ज्यादा vapors दिख रहे हैं. Water starts boiling because of the heat which is produced. Okay, so what is the reaction? Calcium oxide CaO, when it is combined with water H2O, you get calcium hydroxide and it gives away a lot of heat. Okay,
So this is calcium hydroxide, and that is activity number 3. So all these examples were examples of combination reactions. Okay, what is combination reaction? When two or more reactants, what are reactants? कोई भी reaction के left side में जो molecules होते हैं, those are reactants. Right side में जो होते हैं वो products. तो reactants को react करने के बाद हमें product मिल जाता है. Okay, so when two or more reactants combine in a reaction to form a single product, एक ही product form होता है, then it is called a combination reaction. अगर दो तीन reactants combine होकर सिर्फ एक ही product मिलता है, then it is called a combination reaction. Okay, so all these three reactions के experiments also we have seen. All these three were examples of combination reaction. यहाँ पे heat कोई molecule नहीं है, right? So इसलिए यहाँ पे भी सिर्फ एक ही product है, which is calcium hydroxide. Okay, so now we are done learning combination reaction. Let us move ahead. Okay, before moving ahead, remember that calcium carbonate, CO3 is carbonate, right? Calcium carbonate is also called as limestone. Calcium oxide is also called as quicklime. Calcium hydroxide is called as slaked lime. And lime water, what is lime water? बहुत लोगों को लगता है लाइम वाटर यानी जो नींबू पील के हम लोग पानी बनाते हैं, नींबू पानी, उसको लाइम वाटर बोलते हैं, बट दैट इज नॉट द लाइम वाटर वी आर टॉकिंग अबाउट इन केमिस्ट्री. ओके, so when you put slaked lime in water, you get lime water. Okay, so CaOH twice or calcium hydroxide plus water is lime water. Okay, so just remember this and copy this in your notebook so that you all don't forget it. Okay, all these are limestone, quicklime, slaked lime, lime water. All these are various compounds of calcium only. Okay, next, again there is a try this on page number 36. What are they saying? Take some sugar in an evaporating dish and heat it with the help of Bunsen burner. Okay, so अभी हमारे पास Bunsen burner का बजट नहीं था, तो हम लोग सादा गैस यूज करने वाले घर वाला. Okay, so what we are going to do is we are going to heat sugar and we are going to see what is going to happen. So you can see they have taken some sugar in a spoon and they are heating on the gas. Let us see what happens. So it starts boiling, brown color का हो जाता है, finally ये black color का चीज पीछे रह जाता है. Okay, if you see, पहले brown color का form होता है substance, and after a long time it is going to turn into black color like this. Okay, so what is happening? This is the reaction which is taking place. Sugar का molecular formula is C12H22O11. Okay, remember the molecular formula for sugar. It will be needed ahead in other chapters as well. Okay, so when sugar is heated, यहाँ पे heat लिखा है, right? What is left is carbon and water is given out. Okay, if you see यहाँ पे vapors दिख रहे हैं, right? Vapors के form में वो water बाहर निकल जाता है, भाग जाता है. Okay, and what is left behind is carbon. So जो black color का चीज दिख रहा है, that is basically carbon. So here they have written, after some time you will see the formation of a burnt out black substance, which is your carbon. So that is your so we are done with this activity as well. Next, we are going to see decomposition of carbon calcium carbonate. Okay, so what are we doing for this particular activity? We are taking a test tube and we are putting calcium carbonate in it. Okay, so calcium carbonate डाल दिया test tube में and we start heating it. And then there is a glass tube which is taking gas which is being produced here to another test tube which has lime water. Again, I've just told you what ये lime water तुम लोग का नींबू पानी नहीं है. Okay, lime मतलब नींबू नहीं है यहाँ पे लाइम वाटर यानी स्लेक्ट लाइम जब पानी में डालते हैं. स्लेक्ट लाइम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब पानी में डाल के मिक्स करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज लाइम वाटर. ओके, सो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने के बाद वॉट एवर गैस इज बीइंग फॉर्म, दैट इज बीइंग taken from here to the other test tube. Okay, so let us see what happens when you do this. So this is the experiment. Here is the test tube in which calcium carbonate has been kept and they are burning it. Okay, and here is the glass rod and that glass rod is being put into another test tube which has lime water. यहाँ पे lime water है. So what can you see here? यहाँ पे छोटे छोटे bubbles form होते हुए दिख रहे हैं क्या तुम लोग को? Just look here. Yes, right, you can see some small bubbles forming here, which means यहाँ पे कोई तो ऐसा gas है which is being formed and being transported from here to here. Okay, so there is some gas over here. So if you do this for a long time, काफी slow speed में gas यहाँ पे मिल रही है, right? So if you do this for a long time, what you're going to see is the color of the lime water in the test tube changes. Okay, let us see why and what are the chemical reactions involved. So first chemical reaction is calcium carbonate, which we have kept here, which is a solid, and once you heat it, triangle का मतलब क्या है? Heat. Okay,
So you heat calcium carbonate, you get calcium oxide plus carbon dioxide, which is given away. So calcium oxide तो यहीं पे टेस्ट ट्यूब में रह जाएगा, बट ये जो कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज गोइंग टू ट्रैवल फ्रॉम हियर फ्रॉम द टेस्ट ट्यूब इन लाइम वाटर. सो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से लेके लाइम वाटर में ट्रैवल करने वाला. सो लाइम वाटर में जब कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं तो व्हाइट कलर का हो जाता है. व्हाई इज दैट? आई थिंक वी हैड स्टडीड दिस इन 9th स्टैंडर्ड. ओके, एंड देयर इज आल्सो गिव रीजन गिवन इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. व्हाई डज लाइम वाटर टर्न मिल्की when carbon dioxide is passed through it? The reason is because of this reaction. So lime water में क्या है? calcium hydroxide है, and you put carbon dioxide through this tube in calcium hydroxide solution, right? So aqueous लिखा है, right? aqueous यानी वो पानी में mixed है. So calcium hydroxide solution में हम लोग carbon dioxide डाल रहे हैं. What you get is calcium carbonate. तो calcium carbonate पानी में mix नहीं होता. It is not soluble in water. वो पानी में मिक्स नहीं होगा. सो पानी के बाहर निकल जाएगा. पानी के बाहर निकलेगा तो व्हाइट पाउडर की तरह दिखने लग जाता है, इसलिए लाइम वाटर मिल्की व्हाइट कलर का हो जाता है. ओके, सो दिस इज द रीजन व्हाई लाइम वाटर टर्न्स मिल्की व्हेन यू पास कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू इट, बिकॉज you get calcium carbonate because of this reaction, and calcium carbonate does not mix in water. So the color of the lime water becomes milky white, as you can see over here. Okay, so we are also done with this activity. Another interesting reaction is this. Okay, we are taking water. यहाँ पे bracket में small l लिखा है, L for liquid. So we are taking water, and if we put electrical energy through water, electricity pass किया पानी में से, तो क्या होने वाला है? You're going to get hydrogen and oxygen. To see this experiment, you can design this experiment at your home as well. Okay, so the setup is very simple. What you do is you take some water and you put pencils. Okay, अब ये पेंसिल का अंदर का जो लेड होता है दैट इज मेड फ्रॉम ग्राफाइट, एंड ग्राफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगा. ओके, देन यू टेक अ बैटरी. बैटरी का वोल्टेज अच्छा होना चाहिए. ओके, अगर तुम लोग सादा छोटा सा बैटरी लोगे देन द वोल्टेज विल नॉट बी इनफ फॉर दिस एक्सपेरिमेंट. ओके, सो यू टेक अ बैटरी विच हैज high voltage value, and you connect both the terminals of the battery to one pencil. Okay, and you also put some salt. अगर salt डालोगे तो reaction का speed थोड़ा increase हो जाएगा. Okay, and once you connect this circuit, what you're going to observe is this. You can see small bubbles forming here, right? वो bubbles क्यों form हो रहे? Because gases are being released over here, hydrogen and oxygen. I think यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है और यहाँ पे ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रहा है. Okay, so this process is called electrolysis. Okay, electrolysis of water. What is electrolysis of water? When you pass electrical energy through water, then hydrogen gas and oxygen gas is released. That is known as electrolysis. Okay, so all these were examples of decomposition reaction. Okay, decompose होना मतलब क्या? Breaking in smaller pieces, right? We had seen already in biology. Decompose करना यानी breaking down in smaller pieces. So decomposition reaction में क्या होता है? One or more products are formed from a single reactant. Okay, एक ही reactant है, उसमें से दो या दो से ज्यादा products form होते हैं. So if you see sugar, एक ही reactant था, उसके दो टुकड़े बन गए, carbon and water. Similarly here calcium carbonate, एक ही reactant था, दो टुकड़े बन गए, calcium oxide and carbon dioxide. And last एक ही reactant था, water, उसके दो टुकड़े बन गए, hydrogen and oxygen. Okay, so all these compounds are being decomposed. Decomposition, it's being broken down in different smaller pieces. That is why it is called as a decomposition reaction. Okay, let us move ahead. Displacement reaction. What is displacement reaction? So don't look at this particular explanation first. Okay, only look at these chemical equations. What can you see? Do you see something special over here? Once I put colors, it should be more obvious. यहाँ पे SO4 यानी सल्फेट था कॉपर के साथ, और आयन, Fe is आयन, राइट? आयन अकेला था. रिएक्शन के बाद क्या होगा? ये जो सल्फेट है वो आयन के साथ आ गया. सो सल्फेट आयन के साथ आ गया, Fe के साथ आ गया, एंड कॉपर जो सल्फेट के साथ पहले था वो अकेला हो गया. सिमिलरली हियर आल्सो CuSO4 कॉपर सल्फेट पहले से था, एंड Pb which is lead, Pb is lead. ओके, सो लेड अकेला था. सो व्हाट हैपेंस इज सल्फेट कॉपर को छोड़ के Pb which is lead के पास हो जाता है. सो लेड सल्फेट मिल जाता है और कॉपर अकेला हो जाता है. सो दिस इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेस होना यानी क्या? बिछड़ जाना. ओके, डिस्प्लेस यानी बिछड़ जाना. सो यहाँ पे
कॉपर बिछड़ जाता है, राइट? कॉपर सल्फेट के साथ था, अभी वो अकेला हो गया, राइट? हियर ऑल्सो कॉपर सल्फेट के साथ था, बट अभी सल्फेट लेड के पास चला गया तो कॉपर अकेला हो गया, सो कॉपर बिछड़ गया। सो बिछड़ने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट यानी दूर हो जाना। So this is called displacement reaction. Okay, so this is a very complicated way to explain displacement reaction, but I'll explain you all anyway. The reaction in which the place of ion of a less reactive element in a compound is taken by another more reactive element by formation of its own ion is called displacement reaction. Okay, it's a very complicated sentence, but what it is trying to say is कॉपर और आयन दोनों का रिएक्टिविटी देखा, कौन ज्यादा इजीली रिएक्शन अंडरगो कर सकता है। सो आयन इजीली रिएक्शन अंडरगो कर सकता है, कॉपर इतना इजीली रिएक्शन अंडरगो नहीं कर सकता, क्योंकि Fe इज मोर रिएक्टिव, इसलिए सल्फेट Fe के पास चला जाता है। ओके, सिमिलरली लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इसलिए सल्फेट लेड के पास चला जाता है, कॉपर के साथ नहीं रहता। Okay, so that is the meaning of this particular sentence. So that is your displacement reaction. Okay, one part of the molecule is going to leave that particular molecule and go and combine with another one, because वो जो दूसरा वाला है वो ज्यादा रिएक्टिव है, पहला वाला इतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं था। The first one was less reactive, और जिसके पास वो चला जाता है that is more reactive. So this is your displacement reaction. Next, this activity we have already seen, okay, in previous learning session. I think in learning session number 2 we had seen this particular activity. So what does this activity say? Add potassium chromate, which is K2Cr O4. So potassium chromate solution in barium sulfate solution. So यहाँ पे जो colorless है that is barium sulfate solution, और यहाँ पे जो yellow color का solution है that is your potassium chromate solution. So you are putting potassium chromate solution in barium sulfate solution. So what did you see? Some yellow color precipitate is being formed, right? So we have already seen this activity, but we had not seen the reaction for this particular activity. So now we're going to see the reaction for this activity. So this is how the reaction for this activity looks like. Okay, so here you have potassium chromate and here you have barium sulfate. So when potassium chromate and barium sulfate come together, these two reactions, these two products we get. Okay, this is potassium sulfate and barium chromate. So यहाँ पे डाउनवर्ड्स एरो, राइट? डाउनवर्ड्स एरो यानी प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। ओके, प्रेसिपिटेट, व्हाट इज प्रेसिपिटेट? पाउडर जैसी कोई चीज फॉर्म हो जाएगी जो नीचे सेटल होने वाली है लिक्विड में, दैट इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेट। सो ये BaCrO4 जो प्रेसिपिटेट है उसका येलो कलर होता है, इसलिए यू कैन सी येलो कलर ओवर हियर। ओके, सो नाउ कैन यू सी समथिंग interesting about this particular reaction? Again, when I put colors to these reactions, it will be more obvious. So now once I put colors, what do you realize? यहाँ पे जो क्रोमेट था पोटेशियम के साथ, वो क्रोमेट पोटेशियम को छोड़ के बेरियम के पास आ जाएगा, देखो बेरियम क्रोमेट हो गया। सिमिलरली यहाँ पे सल्फेट, सल्फेट यहाँ पे बेरियम के साथ था, that is going to, now it is going to leave barium and it is going to join with potassium. Okay, so here you can see potassium sulfate. So chromate goes with barium and sulfate goes with potassium. That is what is happening here. तो ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह ही है, राइट? यहाँ पे जो क्रोमियम है वो पोटेशियम के साथ बिछड़ के बेरियम के साथ चला जाता है। सिमिलरली यहाँ पे जो सल्फेट है वो बेरियम का साथ छोड़ के, बेरियम से बिछड़ के, बेरियम से डिस्प्लेस होके पोटेशियम के पास चला जाता है। सो दैट इज व्हाट यू गेट हियर। सो यहाँ पे दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, राइट? दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों? क्योंकि दो चीजें डिस्प्लेस हो गई, क्रोमेट भी डिस्प्लेस हो गया, सल्फेट भी डिस्प्लेस हो गया। Okay, so this is double displacement reaction. So how do you explain this? The reaction in which ions in the reactants are exchanged to form a precipitate are called double displacement reaction. तो यहाँ के जो ions है क्रोमेट और सल्फेट वो एक्सचेंज हो गए, जिसके पास क्रोमेट था उसको सल्फेट मिल गया, जिसके पास सल्फेट था उसको क्रोमेट मिल गया। So the ions in the reactants have exchanged and because of that precipitate is forming. Okay, so this is your precipitate, right? Here I have forgotten to put the arrow, downwards arrow. तो यहाँ पे ये precipitate form हो जाता है, पाउडर जैसी चीज नीचे मिल जाती है। So this kind of reaction is called as double displacement reaction. Okay, exothermic and endothermic and exothermic processes. Okay, so process in which heat from outside is absorbed is called as endothermic. Okay, endo का मतलब क्या है? अंदर, एंडो का मतलब है अंदर। सो व्हेनेवर हीट फ्रॉम आउटसाइड इज एब्सॉर्ब्ड, हीट बाहर से अंदर ले लेते हैं तो उसको
एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोल देते हैं. ओके, एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ आइस. जब भी आइस मेल्ट हो रहा है इट मींस आइस इज टेकिंग हीट फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, राइट. बाहर से अपना हीट एब्जॉर्ब कर रहा है आइस और वो पानी बन रहा है अपना टेम्परेचर इंक्रीज करके. अनदर एग्जांपल इज डिसोल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन वाटर. जब तुम पोटेशियम नाइट्रेट को पानी में डालोगे दैट टाइम आल्सो हीट इज गोइंग टू बी एब्जॉर्ब फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स. सो दैट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है बाहर से. उसका ऑपोजिट क्या होगा? एक्सोथर्मिक, राइट. सो प्रोसेसेस इन विच हीट इज गिवन अवे. एक्सो यानी बाहर फेंक देना. ओके, एक्सो यानी बाहर. सो व्हेन हीट इज गिवन अवे, थ्रोन आउट, दोस प्रोसेस आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक प्रोसेस. एक्सो यानी बाहर. सो एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ आइस फ्रॉम वाटर, राइट. सब जब पानी से आइस बन रहा है तब वो हीट बाहर फेंक रहा है. अनदर एग्जांपल इज डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर. जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में मिक्स करोगे तो काफी हीट बाहर निकलेगी. वन मोर एग्जांपल वी हैड सीन टुडे. व्हाट वाज दैट एग्जांपल? वी हैड मिक्स्ड कैल्शियम ऑक्साइड इन वाटर, राइट. हम लोग ने देखा था the water starts burning, sorry, not burning, water starts boiling. Why is that? Because बहुत सारा heat is given out. So that is also an example of exothermic process. Okay, so this is endothermic and exothermic process. Endothermic यानी जिसमें heat absorb हो रहा है, exothermic यानी जिसमें heat बाहर फेंका जा रहा है. Okay, so these are endothermic and exothermic processes. What are endothermic and exothermic reactions? Very simple. एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस आर द वंस इन विच हीट इज गिवन अवे. बाहर फेंक दिया जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट. एंड एंडोथर्मिक में उल्टा होगा. एंडोथर्मिक आर द केमिकल रिएक्शन विच हीट इज आइदर एब्जॉर्ब, या तो आजू से अपने आप एब्जॉर्ब कर रहा है, या फिर हीट हैज टू बी सप्लाइड कंटिन्यूसली. फॉर एग्जांपल, मैग्नीशियम को जब हम बर्न कर रहे थे अपने आप शुरू नहीं होता वो एक्सपेरिमेंट. तुम्हें उसको पहले जलाना पड़ता है, फिर वो शुरू होता है एक्सपेरिमेंट, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन वाला, राइट. सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक, जिसको हीट एब्जॉर्ब करना पड़ता है. ओके, so here you can see examples of endothermic and exothermic reactions. Okay, CaCO3 टेस्ट ट्यूब में हम लोग ने जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, राइट. सो उसको हीट देना पड़ा, राइट. सो इट इज एब्जॉर्बिंग हीट. whichever is absorbing heat it is called as endothermic chemical reaction. तो इसको एंडोथर्मिक बोल दिया. नेक्स्ट इज CaO प्लस H2O. अगेन वो जो पानी में हम लोग ने कैल्शियम ऑक्साइड डाला था, राइट. एक बीकर रखा था, बीकर में पानी था, नहीं, बीकर में कैल्शियम ऑक्साइड था और उस पर थोड़ा सा पानी डाल दिया तो पानी उबलने लग गया. सो बहुत सारा हीट was given out, right. So that was an example of exothermic reaction when you put water in calcium oxide pieces. Okay, so these are examples of endothermic reactions and exothermic reactions. Okay, so there is this end of chapter question given on page number 45 which says explain the following terms with examples. So now that we have seen all different types of chemical reactions, you should be able to explain endothermic reaction, combination reaction, balance reaction and displacement reaction by yourself. उसको एक या दो लाइंस में explain करना है and then you have to give examples, and we have discussed so many examples today, right. So I think you all should be able to solve this by yourself. Do this as your practice question. Okay, I believe you all can write answer to these questions by yourself now. Okay, so just that's it for this learning session. Just check, have you accomplished the learning objectives for today? If I tell you to explain any one type of these reactions, will you be able to explain and will you be able to give examples? तुम लोग को examples by heart करने पड़ेंगे. Okay, एग्जाम में पूछेंगे displacement reaction को explain करो, उसका example दो. So displacement reaction का explain तुम लोग कर दोगे, but उसका example याद होना चाहिए कि अच्छा ये example displacement का है, ये example combination का है, so on and so forth. Okay, so just check whether you have accomplished your objective for today or not. Okay, that's it for this learning session. I hope you enjoyed the different experiments. Chemistry is only fun when you actually do the experiments. I don't know how much fun that is when you see it on screen on your mobile, but I've tried to make it as much fun as possible through whatever I could find on the internet. Okay, so I hope you enjoyed, I hope you understood, and we'll see each other in the next learning session. Okay, till then, goodbye, see you and have a nice day. Bye. Peace.